Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm a Professor Nilesh Anandwani, owner and lecturer of Anandwani Biology classes. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to teach you transport of gases. Yes, transport of gases related to transport of O2 from lungs to tissue and carrying carbon dioxide from tissues to back to lungs. This is transport of gases. Even though transport of gases is a clear-cut simple concept, some students are getting confused between exchange of gases and transport of gases. Exchange of gases is what only oxygen is bounded to the hemoglobin. Yes, this is given to the tissue as a transport of gases, and in returning carbon dioxide is collected from tissue which binds to hemoglobin. So oxygen binds to hemoglobin and carbon dioxide binds to hemoglobin. That concept is basically exchange of gases, but mainly transport of gases is nearby like that, but it has some differences. In transport of gases, we are transporting oxygen from lungs to the body tissues with the help of a blood, and we are collecting carbon dioxide from body tissues back to the lungs again with the help of a blood as well as some other components. So let's begin transport of gases in detail. मैं आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं. So transport of gases. Remember, to transport of gases, we have to think about transport of O2 as well as transport of CO2. When we are talking about transport of O2, for explaining oxygen, I will use a red color marker because oxygenated blood, pure blood is O2 plus Hb. And to explain carbon dioxide, I will use a blue color marker because carbon dioxide when combined with a hemoglobin, it becomes a deoxygenated blood or impure blood, and that blood is generally not red in color. It's explained in a bluish in color. Okay, so generally O2 transport. Yes, how does O2 transport? So 97% of O2 transport via RBC and 3% O2 is transport via dissolved state of plasma. Yes, so in our body oxygen around 97% is transported via RBC and 3% oxygen is transported via dissolved form inside plasma. And if we talk about carbon dioxide, so CO2 transport is around 20 to 25% transport via RBC, 70% it is transport via bicarbonate, and remaining whatever you can count. Yes, now suppose we count it around 7% as per the NCERT book, 7% transport in dissolved state of plasma. करेक्ट? तो ये क्लियर है हमारे सामने. पहले इतनी कंसेप्ट समझ लीजिए. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से फॉर्म में और कौन कौन से थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट is 97% via red blood cells RBC and 3% via dissolved state in a plasma, whereas carbon dioxide around 20 to 25% transport by RBC, 70% transport in the form of bicarbonate, and remaining 7% transport with the help of a in dissolved state of a plasma. So this is about transport of O2 and CO2, how they are transporting. So
In this section, in this side, I will explain you transport of O2, and in this side I will explain you transport of CO2. Yes, I will try to make a very short handwriting just because I don't wanted to rough anything, and even though I don't wanted to hide anything, I wanted to explain you everything which is given in our NCERT. Yes, so let's start. First of all, I'll tell you transport of O2, then we'll discuss about transport of CO2. So, transport of O2 is mainly with the help of RBC, and we know that inside the RBC, cytoplasm is filled with the help of HB, hemoglobin. What do you say? So what is hemoglobin? Hemoglobin is a iron containing red color pigment present inside RBC can hold around 4 oxygen molecule. Yes, see this sentence, it's very important for you. What is hemoglobin? Hemoglobin is an iron containing red color pigment present inside red blood cell and can hold around 4 oxygen molecule at one time. hemoglobin क्या है? hemoglobin ये एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेड कलर है और आयरन से बना हुआ है और ये एक पिगमेंट है, और एक हीमोग्लोबिन तकरीबन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके रख सकता है। हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये हमें बेसिकली पता ही है, हमें सर्कुलेशन चैप्टर हमने ये सब चीजें लिखी और 7th स्टैंडर्ड से हम ये बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है, ये वाली कंसेप्ट आप 12th स्टैंडर्ड में ही देख रहे होंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन हैव 2 चेन, one is alpha and second one is beta. 2 oxygen molecule can bind to alpha and 2 oxygen molecule can bind to beta. So it means hemoglobin can bind with a 2 oxygen at here, 2 oxygen at here. So total oxygen bind with hemoglobin is a 4O2. Is it clear everyone? Yes. Now remember, when hemoglobin means Hb binds to O2, it takes place inside alveoli. Yes, now just imagine this one is alveoli. This alveoli have Hb. Yes, plus it binds with a O2. What does this compound? This compound is called oxyhemoglobin. This compound is called oxyhemoglobin, and to form bond between oxygen plus hemoglobin, this bond after forming, this concept is called oxyhemoglobin. Yes, oxygen plus hemoglobin together it is called oxyhemoglobin. एक चीज आप याद रखिए, hemoglobin have attraction or affinity towards oxygen as well as carbon dioxide both. Yes, but it depends which is the side. If it is a alveoli of a lungs, hemoglobin more it will bind with the oxygen and less it will bind with the carbon dioxide. And if it is a body tissues, hemoglobin more bind with the CO2 and less bind with the oxygen. Hemoglobin actually
कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों से बाइंड हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन कौन सा है। अगर हमारा ऑर्गन अल्वियोलाई ऑफ लंग्स है तो अल्वियोलाई के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को से बॉडी टिश्यूज तक लेके जाना है, और ऑक्सीजन जब बॉडी टिश्यूज के पास चले आता है तब हीमोग्लोबिन की अट्रैक्शन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होती है, ऑक्सीजन की तरफ कम होती है। ये क्या होता है कंसेप्ट में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको प्रॉपर्ली सब समझा रहा हूं। Oxygen bind with the hemoglobin. This is called oxyhemoglobin. And to form a oxyhemoglobin, there are four major factors. There are four major factor. Major factor involve in oxygen hemoglobin binding. Yes, so there are four major factors which are playing important role in binding of oxygen with the hemoglobin, so called oxygen hemoglobin binding. These factors are PO2, PCO2, concentration of hydrogen ions, and temperature. In the last lecture, I taught you what is a PO2, PCO2. P stand for partial pressure. मैंने आपको ये बताया था कि partial pressure का मतलब क्या होता है। ये देखिए, the contribution of individual gases amongst mixture of gases, it is called partial pressure. काफी सारे गैसेस में से जब एक सिंगल गैस खुद का कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, खुद का कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर. So P is indication of partial pressure. Partial pressure of oxygen means power of oxygen. Partial pressure of carbon dioxide means power of carbon dioxide. Then concentration of H plus ions means hydrogen ions, and then temperature. ये चार ऐसी चीजें हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में रोल प्ले कर सकती है, या तो उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना या तो उनकी बॉन्डिंग को फॉर्म होना. अगर PCO2 की क्वांटिटी बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, लेकिन अगर PO2 की क्वांटिटी बढ़ गई तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा. टेम्परेचर अगर कम या ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड या तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है या तो ब्रेक भी कर सकता है. सेम वे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो पीएच लेवल के ऊपर डिफरेंसेस आ सकते हैं और फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा या नहीं होगा, ये कुछ सोचने वाली चीजें हैं. तो इसके लिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करें, ऑक्सीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्म करें, इस चीज के लिए चार फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है. और ये चार फैक्टर है partial pressure of O2, partial pressure of CO2, concentration of hydrogen ion and temperature. Remember, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तब एक सिग्मोइड कर्व फॉर्म होता है, और वो कर्व कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं. सी, ये कर्व कुछ इस प्रकार से होता है. Yes, there is a 20, there is a 40, there is a 60, there is a 80, there is a 100. Yes, और यहां पे है परसेंटेज ऑफ saturation of hemoglobin with O2. I don't have that much space to explain you, लेकिन आप समझ लीजिए percentage of saturation of hemoglobin with O2. Yes, then partial pressure of O2 in mmHg. So now there are, this graph paper is there. This graph paper is there. So now there is a 20, 40, 60, 80, 100 like that. Yes. Now remember, when oxygen combined with the hemoglobin
to form oxyhemoglobin compound inside the alveoli. That time a sigmoid curve is formed, and this sigmoid curve is like that. Yes, why it is called sigmoid curve? It is also called as S curve or sigmoid curve. As you can see, the shape of this is a sigmoid or S curve. This concept is called oxygen dissociation curve. This concept is called oxygen dissociation curve. I hope so you understood. जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तब यहाँ पे कर्व फॉर्म होता है, और इस कर्व को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. इस कर्व में हम क्या प्लॉट करते हैं? कॉन्सर्न परसेंटेज ऑफ saturation of hemoglobin with O2 against partial pressure of O2 in mmHg. जब हम हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऑक्सीजन के साथ पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, or also known as the sigmoid curve, because the shape of this curve is a sigmoid curve. Now I would like to tell you very important things about the transport of O2. Remember, transport of O2 takes place. Transport of O2 takes place from alveoli, blood, tissue. Actually, transport of O2 takes place from alveoli to tissue, but who is a medium for transport? Blood. Same way जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? Transport of CO2 takes place from tissue to alveoli, but medium is blood. Transport. Alveoli खुद तो टिश्यू की तरफ नहीं जाएंगे, तो उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ऑक्सीजन को तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा. तो इसके लिए हमें ये चीज लिखनी होती है. Now remember, you can say association of O2 is higher in alveoli and lower in tissue. Yes, and CO2 association is low in alveoli and H plus ions low temperature low. अब ये चीज ये देखिए, हमने ये देखा था हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीमोग्लोबिन कंपाउंड फॉर्म होता है, तब चार फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, concentration of hydrogen ions and temperature. तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन when it bind with a hemoglobin, that time oxygen have a more association in alveoli. एक चीज समझ लीजिए, suppose our blood is found in our alveoli. So in alveoli, hemoglobin combined with a oxygen, correct? So hemoglobin and oxygen have a more attraction, means more association, and carbon dioxide and hemoglobin have less attraction, means low association. Why? Because CO2 has to go outside by exhalation and O2 has to go inside the tissue, and therefore oxygen bind with a hemoglobin more strongly. So oxygen bind with hemoglobin more strongly, that is more association power. Carbon dioxide bind with hemoglobin very low. Yes, means very low association, because CO2 don't have to bind with a hemoglobin. Plus there is low hydrogen ion concentration and low temperature. All these factors are very important, favorable factor for transport of O2. Now hemoglobin is bound with O2 and it is traveling towards the body tissue. Clear? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड होता है तब उनकी एसोसिएशन पावर ज्यादा होती है अल्वियोलाई में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन पावर मतलब अट्रैक्शन पावर काफी कम होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर जाना है, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ये भी दोनों कम है.
तो ये चार चीजें, O2 हाई कॉन्सेंट्रेशन अट्रैक्शन, CO2 लो कॉन्सेंट्रेशन अट्रैक्शन, लो H प्लस आयंस एंड लो टेम्परेचर, ये चारों की चारों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है O2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक चीज याद रखिए, 100 मैं यहां पे बताता हूं, 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 5 ml of O2 in टिश्यू। मतलब अगर टिश्यूज की तरफ 100 ml ब्लड जाता है तो इसमें कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है? 5 ml। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में 1 लीटर टिश्यू अगर वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, 1 लीटर ब्लड टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है तो कितना होगा? 5 into 10 50 ml ऑक्सीजन। और ऐसे ही 5 लीटर ब्लड हमारे टिश्यूज तक जाता है पर मिनट तो कितना होगा? 50 into 5 250 ml। मतलब 1 मिनट में हमारे बॉडी टिश्यूज को कितना ऑक्सीजन मिल सकता है? 250 ml पर मिनट, 250 ml पर मिनट। तो ये हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। Now we are talking about transport of CO2. So I'll use a blue color marker as I told you. So transport of CO2. Transport of CO2 takes place 20 to 25% via RBC, 70% in a bicarbonate form and 7% in a dissolved state of a plasma. Now I'll tell you, this takes place in tissues to blood and blood to you can say alveoli of lungs. Remember, transport of a carbon dioxide takes place from body tissues to the blood and blood to the alveoli. Like oxygen was transporting from alveoli to blood, blood to tissue, and it will transport from tissue to blood and blood to alveoli. मतलब ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। मान लो एक ट्रेन चल रही है मुंबई से सूरत की तरफ और एक ट्रेन चल रही है सूरत से मुंबई की तरफ, तो बीच के जो स्टेशन है वो वहीं के वहीं रहेंगे, ठीक है। ये कॉमन चीज है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ टिश्यू टेक्स प्लेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 टेक्स प्लेस फ्रॉम टिश्यू टू alveoli but medium is blood, and transport of O2 takes place from alveoli to tissue but medium is blood. Clear? Now remember, now we have to form a hemoglobin, you can say binding with the carbon dioxide. So remember, in tissue CO2 have more association with O2, with Hb, and O2 have low association with Hb, and hydrogen ion are more. Actually in CO2 we are not talking about hydrogen ions and temperature, so these two things are very important. When we are transporting CO2 from tissue to alveoli, that time CO2 have a more association towards hemoglobin and and oxygen have a less association towards hemoglobin. Remember, 100 ml of blood transport 4 ml of CO2 in alveoli. आप में से काफी स्टूडेंट इसे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं 100 ml of blood transport 5 ml of O2 in tissue. यस, ये कंफ्यूजिंग नहीं। हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसको कर रहे हैं? टिश्यूज को कर रहे हैं ना। तो 100 ml जब ब्लड टिश्यू की तरफ जाएगा तो कितना ऑक्सीजन रिलीज होगा? यस, 5 ml। सेम वे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? टिश्यू से लेके अल्वेओलाई की तरफ कर रहे हैं ना। सो सेम वे जब 100 ml हम ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे तब 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहां पे? अल्वेओलाई की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml के पीछे 4 ml होता है और CO2 100 ml के पीछे सिर्फ 5 ml होता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं,
when oxygen combined with the RBC, which is around 90, when oxygen combined with the hemoglobin, it forms oxyhemoglobin. Same way, when carbon dioxide combined with the hemoglobin, CO2 plus Hb is equal to carbaminohemoglobin. एक चीज मैं आपको और रिएक्शन ही बताता हूँ, एक रिएक्शन देखिए, वो रिएक्शन इससे रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. So here it is. Yes, and the reaction is CO2 plus water in presence of enzyme carbonic anhydrous. It gives H2CO3. Yes, but this reaction can be the reverse. So you can say H2CO3 in presence of enzyme carbonic anhydrous. Carbonic anhydrous. It forms HCO3. It forms HCO3 plus hydrogen ions. Yes. So carbon dioxide plus water in presence of enzyme carbonic anhydrous. This found inside the RBC. Yeah? This found inside the RBC. Yes. Then after forming, again carbonic anhydrous enzyme react with this substrate and turn into the bicarbonate plus hydrogen ion concentration. So this takes place inside what? RBC. एक चीज फिर से समझ लीजिए आप, hemoglobin bind with oxygen in alveoli strongly because hemoglobin want to go to tissue, and in alveoli CO2 bind with hemoglobin very loosely because CO2 want to go outside. So oxygen bind with hemoglobin very strongly in alveoli, CO2 bind with hemoglobin in alveoli is very loose, hydrogen ions concentrations are very low and temperature is low. Now these four conditions are very favorable for transport of O2 to body tissues. So blood from alveoli go to the heart and systemic aorta, everything we know, then go to the tissue. When inside the tissue, hemoglobin shows association with oxygen very low because hemoglobin want to release oxygen into tissue, and hemoglobin will show more association with CO2 because hemoglobin want to collect CO2 from tissue. So hemoglobin collects CO2 from tissue and release O2 in tissue, and CO2 bind with hemoglobin very strongly in tissue and then come to the alveoli, and again CO2 bind with hemoglobin very loosely because CO2 want to go outside. This concept happened 24 hours, 7 day, 12-month lifetime in our body. This is called transport of gases. I hope so you practically understood in detail. Have a good day.